Now we start the next one. You can see the question in the textbook page number 28, sum number 12. First, I read the question for you to get idea. Sarda and Jamna are partners of a firm. Their capital as on 1/4/16 was rupees 30,000 and 40,000 respectively. During the year, Sarda has withdrawn rupees 6,000 on 1/4/16 and Jamna rupees 8,000 on 1/1/17. The provisions of partnership deed are as follows. First point, provide interest on capital at 10% per annum. Point 2, provide interest on drawing 12% per annum. Third, monthly salary of ₹500 is payable to Sarda for her active participation in the business, and annual commission of ₹3,000 is payable to Jamna. These are the partnership deeds. On 1/10/16, Sarda has given a loan of ₹6,000 to the firm. There is no provisions in the partnership deed for interest on loan. Sarda demands interest at 10% per annum on the loan. Next topic, profit for the year ending on 31/3/17 before considerations of above provisions and interest on the loan of Sarda of the firm is ₹39,820. From the above informations, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account of the firm. So उसने जो डिमांड की है, दो अकाउंट को डिमांड की है. तो फर्स्ट वी प्रिपेयर profit and loss appropriations account for the year ending 31/3/17 of the firm of Sarda and Jamna. The format of the PL appraisals account, particular amount, debit and credit. Second account, partners capital account, date, particulars, दो partners है Sarda and Jamna. Again date and particulars Sarda and Jamna. ये दोनों के फॉर्मेट और हर एक एंट्री हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इसका नाम हम नीड टू रिपीट फॉर ऑल दिस थिंग्स अगेन. नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व द सम. मैं धीरे-धीरे क्वेश्चंस को बोल रहा हूं और हर एक एंट्री को पोस्ट करता जाऊंगा और उसके सामने मैं टिक करूंगा. इससे मालूम पड़ेगा हमने एंट्री कैसे पोस्ट की है. नाउ यू सी फ्रॉम द बिगिनिंग. Sarda and Jamna are the partners of a firm. Their capital as on 1/4/16 was ₹30,000 and 40,000. उसकी capital कितनी दी है? 30 and 40. तो first we write in partners capital account credit side by 1/4/16 opening date of the year by balance BD. Sarda 40,000 and Jamna Sarda 30,000 and Jamna 40,000. Next point. During the year, Sarda has withdrawn ₹6,000 on 1/4/16 and withdrawing done by the Sarda. So that entry partners capital account debit side 1/4/16 to drawing account Sarda 6,000. Again in 1/4/16 while Jamna ₹8,000 on 1/1/17. Jamna का drawing किया 1/1/17. So 1/1/17 to drawing account in Jamna's account 8,000. Sarda ने ड्राइंग किया है 1/4/16 को और Jamna ड्राइंग किया है 1/1/17 को. आगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पार्टनर डील. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. जो पार्टनर्स की मूड़ी है यानी कैपिटल उस पे हमें 10% इंटरेस्ट देना है. So this interest is income for the partner. So its accounts to be credited and debit to P and appropriation account. तो सबसे रेडी किया date 31/3/17. Interest obviously we get after the end of the year. So by interest on capital 10%, 30,000 10% 3,000, 40,000 10% become 4,000. This is the income for the partner. At the same time, this expense for the firm. So we write on the debit side to interest on capital. Sarda 3,000, Jamna 4,000, 3 plus
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। जो पार्टनर ने ड्राइंग किया है उस पे हमें 12% इंटरेस्ट ड्राइंग पे लेना है। तो दिस इज द एक्सपेंस फॉर द पार्टनर, सो वी राइट डेबिट साइड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो होगी तारीख 31/3/17, वी ऑलवेज पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन ड्राइंग। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6000 का 12% के पूरे साल का होगा 720 एंड 8000 का 12% के होगा 1.17 से 31/3/17 3 मंथ का होगा 240। This is the interest of the full year and this is the interest for the 3 months. So you get that 240. This is the expense for the partner and the same time is income for the firm. So we get second entry P and appropriations account credit side by interest on drawing Sada 720 and Jamna 240. When you add you get last 960. Okay, next point. Monthly salary of this 500 is payable to Sada. अब Sada को सैलरी देनी है पर मंथ 500 rupees. So it is income for the Sada. So we write on the partners capital account credit side by salary 500 into 12. Because 500 is the for the 1 month. So 12 month कितनी हो जाएगी 6000. जो सादा के लिए इनकम है सेम थिंग इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। सो सेकंड इफेक्ट पी एंड एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी अकाउंट सादा 6000। आगे देखते हैं एंड एनुअल कमीशन ऑफ दिस 3000 इज पेएबल टू जमुना। पर जमुना को 1 साल का कमीशन देना है। हाउ मच 3000। So we write is an income for the partners. So same date 31/3/17 by commission and Jamna's run 3000. जो जमुना के लिए इनकम हुई same thing is the expense for the firm. So we write on the debit side of the P and appropriations account to commission Jamna 3000. जो एंट्री यहाँ होगी क्रेडिट it will come here debit और जो यहाँ एंट्री होगी क्रेडिट it will come here debit, always on the opposite side. Next entry. On 1/10/16, Sada has given the loan of rupees 6000 to the firm. There is no provisions in the partnership deed for interest on loan. Sada demands interest at 10% per annum on the loan. इसके रूल्स होता है जो भी पार्टनर लोन देता है उस पे हमें 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है। Here no interest is determined. So here we cannot pay interest 10% to partners loan. अगर देने का होगा 6% it will come in the PL account debit side. So for this transactions we cannot pass any in this account. आगे profit for the year ending 31/3/17 before the considerations of the above provisions and interest on loan of Sada. The firm is rupees 39,820. यानी कि बिजनेस में हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है। So we write in the P and appropriations account credit side by PL account net profit 39,800. Time to close the sum. So first we see which side is bigger, either credit or the debit. Credit side से हम debit से जाएंगे तो we will get the profit. But if we go from the debit to credit, we get the loss. From this you can judge credit side पड़ी है, so you add both the entry, you get the total 14,780 और ये सेम फिगर मैंने यहाँ लिख दिया 40780 और उसमें से ये तीनों एंट्री को मैंने माइनस कर दिया, so I get the profit 24,780. Now no clarification is given, so we divide this profit in equal ratio. यानी कि सादा एंड जमुना get equally 12,390 and 12,390. ये जो प्रॉफिट मिला है ये P and appropriations अकाउंट में डेबिट साइड है तो कहां जाएगा पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट because profit for the partners. So I write here by P and appropriations account profit 12390 and 12390. Now time to close partners capital account. First we close the Sada's account
you make the total of these four entries 1, 2, 3, 4. You get the 51,390. Now close Jamna's account. Again add all four entries 1, 2, 3, 4. You get 59,390. Same total you write on the debit side 51390 for the Sada and 59390 for the Jamna. Date 31st is 17 to balance saving. In total lesson I will minus this debit both entry. तो क्या करेंगे ये टोटल lesson ये दोनों एंट्री को निकालेंगे. Get the profit 44,670 for the Sada and for the same time Jamna. In total lesson इन दोनों एंट्री को माइनस करेंगे. Get the profit 51150. This is the called closing capital of the partners, which we carry from here to next one is the called balance. Here your complete sum is over.